So hello everyone, welcome back to Ollywood Agri Coaching. And for all the students who have given this time IBPS AFO mains as well as SO mains, all these students are expecting only for one thing, and that is your mains result. Yes, जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने SO mains दिया है, चाहे फिर वो IT हो, मार्केटिंग हो या फिर AFO हो, all these students are waiting eagerly for only one thing, जो कि है रिजल्ट. रिजल्ट के बाद हम प्रिपरेशन करेंगे इंटरव्यू का. For all such students there is a really important update which we will be discussing today. और वो अपडेट ये है कि रिजल्ट के कंटेक्स्ट में what would be the expected date of declaration of your IBPS AFO mains result. ठीक है? And how we are going to do that? Yes, we are going to compare previous years whatever examination dates are and result declaration dates are. और उससे फिर हिसाब लगाएंगे कि भाई इस वीक में आने वाला है रिजल्ट कि नेक्स्ट वीक. ठीक है? So directly when you look at the year of 2021, अगर आप देखते हो सारे एग्जाम डेट्स को, यहां पर सारे एग्जाम डेट्स मेंशन्ड है. मेन वी आर कंसर्न विद मेंस एग्जाम डेट. कब हुई है आपकी मेंस एग्जाम? 24th of January 2021 and IBPS SO मेंस रिजल्ट इज ऑन 4th of February 2021. So 24th January को आपका हुआ है मेंस एग्जाम and result is on 4th February. Just remember the dates of the mains exam and result declaration. Then the next year 2022 आपका मेंस एग्जाम डेट था 30th of January 2022 and मेंस रिजल्ट was on 15th of February. ठीक है? Now similarly when you look at this year in the year of 2023, IBPS AFO का मेंस एग्जामिनेशन हुआ है 28th of January 2024 को. Now when you look at it and when you compare with the previous year, 24 जनवरी को था तो आपका 4th फरवरी को रिजल्ट लगा है एंड 30 जनवरी को जब एग्जाम था तो 15 फरवरी को यहां पर रिजल्ट लगा है. सो देयरफॉर वी कैन एक्सट्रापोलेट दैट नाउ इन दिस ईयर IBPS AFO 2023 द एग्जाम वाज ऑन 28th ऑफ जनवरी. सो 28th ऑफ जनवरी को अगर एग्जाम था तो ऑफ कोर्स 15th और 14th फरवरी के पहले ही रिजल्ट लगेगा एंड दैट इज व्हाई योर रिजल्ट कुड बी इन दिस वीक ओनली बिटवीन योर 8th to 14th ऑफ फरवरी. तो इसका मतलब ये है इफ यू लुक एट ऑल योर पास्ट ईयर्स ऑल्सो examination date and result declaration date, you will get an idea कि आपका result you can expect very prominently on 11th, 12th और 13th of February. इन तीनों dates में कभी ना कभी आपका result लगेगा. ठीक है? So you can expect that. Briefly अगर आप period देखना चाहते हो this week, be ready, आपका result लगने वाला है. Now what is the most important takeaway apart from this date of declaration, that is 8 to 14 Feb? The most important thing is कि your IBPS AFO mains examination declaration or result date is not 10 or 15 days afterwards. ठीक है? 15-20 दिन आपके एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन को दिन बचे नहीं है. ठीक है? जस्ट इस वीक में रिजल्ट लग सकता है या फिर अगले वीक में भी अगर पोस्टपोन्ड हो जाए तो अगले वीक में भी लग सकता है. दिस शोज अस कि आपको अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन कितने जल्दी प्रिपेयर करना चाहिए. नाउ इज नॉट द टाइम टू वेट, नाउ इज एग्जैक्टली अ अपॉर्चुनिटी एंड टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन वेरी क्विकली. ठीक है? क्योंकि रिजल्ट तो आने ही वाला है, इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट हफ्ते, राइट? तो आपके पास 10-20 दिन बचे ही नहीं है. सो स्मार्ट थिंग वुड बी टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू. नाउ दिस ब्रिंग्स टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है related to your interview preparation. And when we talk about interview preparation, yes, we will try to discuss and we will try to see that how we can build our overall interview preparation so smoothly that this time to be an agriculture field officer will not be just a dream but an accomplishment. तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं. एंड फॉर दैट हियर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अगर आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे हो जाए, अगर आप चाहते हो दैट दिस टाइम यू वांट टू हैव योर नेम इन द फाइनल लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, then definitely we at Ollywood have brought a great opportunity which includes IBPS AFO 2023 personalized interview batch for all the IBPS AFO aspirants. जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और मे बी इवन आफ्टर रिजल्ट्स ऑल द स्टूडेंट्स हु फील कि उनका सिलेक्शन होके रहेगा या फिर हो ही गया है, then definitely for all such students this is an really great opportunity. Now why this personalized interview batch for AFO 2023 is one of a kind? इसमें ऐसा क्या है? We will now discuss the highlights of all our interview batch as well as the course details. But before that, let me introduce to you to our panel members. So here our panel has been headed by
G. Simatoli sir, who is an ex-GM of Syndicate Bank and also agricultural field officer only. He started his career as a AFO. Apart from being an ex-GM, he is also an ex-IBPS panel member. So this is how our chairman is. And apart from that, I don't need to give introduction of Aditya sir. Aditya sir का मुझे introduction देने की जरूरत नहीं है, because almost every year IBPS का कोई भी examination होने दीजिए, ठीक है, it may be PO, it may be even your SO. Thousands of students are under the guidance of Aditya sir, and his feedback as well as his guidance is very important for clearing IBPS examinations. So that is why here Aditya sir's guidance and feedback would be very, very crucial. Now, अगर AFO का interview है, when we are talking about agriculture field officer interview, of course agricultural questions and concepts would be asked, and that is why, of course, that's where I will come into the panel, as whatever questions would be asked in your interview, I will make it sure that agricultural static questions and current affairs questions we will prepare in such a way, and we will try to make your interview in such a way that you will not be losing any of the knowledge point of view also, as well as you will be able to answer all the questions in the interview hall. Okay, now let us jump into the course highlight. Ab why this personalized interview batch or program for IBPS AFO 2023 is one of a kind? ये इतना अलग और best program क्यों है? Let's look at it. So in this program we are not just providing mocks to you. ये एक mock interview program नहीं है. Rather than that, इसको हम personalized interview batch क्यों कह रहे हैं? क्योंकि apart from 2 one-on-one mocks with the panel members of ours, 2 interview के अलावा we are also providing 10 plus live classes for overall interview process understanding of IBPS as well as agricultural concept understanding. Other than that, even 10 plus live classes for all round interview preparation, which includes all the stages of interview, what are the questions asked, overall communication skills, सारी चीजें आपकी इंटरव्यू की कवर होंगी इन स्पेशल लाइव सेशंस में. Various special sessions also on personality development which are associated, क्योंकि इंटरव्यू में आजकल it is more about personality as well as knowledge assessment, तो इसके लिए आपके special sessions भी होंगे. Other than that, as it is an agricultural field officer interview, आपको बहुत सारे एग्रीकल्चर के डिफिकल्ट कंसेप्ट पूछे जाएंगे, एंड देयरफॉर 70 प्लस रिकॉर्डेड सेशंस आर आल्सो देयर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कंसेप्ट्स, एंड स्पेशल सेशंस आर आल्सो देयर वेयर वी विल ट्राई टू कवर एंड गिव यू ओवरऑल knowledge as well as understanding related to agricultural current affairs also, concepts also, and overall whatever interview guidance you would be requiring to clear this time's IBPS AFO interviews. So this is a great opportunity and this is an one of a kind golden ticket which you shouldn't miss. अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन इस बार हो, डेफिनेटली अगर मैं उस जगह पर होता, I would have never left such one of a kind personalized interview batch. So what are you waiting about? मैंने आपको expected exam date भी बता दी for all the student जिनको ये लगता है कि भाई मेरा क्लियर होगा, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नहीं भाई मैं रिजल्ट का वेट करूंगा. So whenever you are ready, definitely we have already launched our personalized interview batch. Join us and fruitfully prepare for your interviews and have your name as an agriculture field officer. Thank you very much.